मी योगेश मोहिते, कोल्हापूर, राहणार कोल्हापूर, महाराष्ट्र. मी कालपासून म्हणजे गेले 2 दिवसापासून मी इथं सेमिनारसाठी आलो होतो, वर्कशॉपसाठी, नाडी परीक्षण आणि मर्मा चिकित्सासाठी. खूप चांगला अनुभव आहे माझा. राहण्याची वगैरे जेवणाची सोय एकदम उत्तम केलेली आहे सरांनी. आणि स्पेशल थँक्यू फॉर राजेश चव्हाण सर. थँक्यू सो मच. Happy life. I had been to this Jeevan Sanjeevani Center Foundation for training of Nadi parikshan, that is pulse determination, and Marma Chikitsa. This course was very useful for me in diagnosis of the diseases which I am having, and also I could diagnose the pulse of other persons also. The Vat, Pitta and Kapha Nadis, how they work and how these are related with your different organs of the body. The atmosphere here where we had been is very pleasant. The food, the training organized by Dr. Rajesh Chauhan sir and also Dr. Naveen Joshi sir, who is from Uttarakhand, is MD Ayurved and is an international trainer giving training on Nadi parikshan. Secondly, the place where we are staying is pollution free and in the nature side. So we enjoy our stay here and with good food and resident facilities. The rooms are very clean and decent with all facilities. With even in winter we have hot water facilities with good breakfast, tea, lunch and dinner. Also, this course has helped us to join as a community. We had met different people from different regions and we could interact with them and got our knowledge exchanged. So I think everyone who is interested should come for this course and at least visit this Jeevan Sanjeevani Foundation. In near future, this will become an international center. I assure you that once you visit, you will visit this place again and again. Thank you, sir. नमस्ते, मेरा नाम पायल राठी। मैं जीवन संजीवनी परीक्षण नाड़ी परीक्षण के लिए आई हूँ और यहाँ पे नाड़ी परीक्षण 2 दिन का सेमिनार था। काफ़ी अच्छे से सर ने सिखाया है, नवीन सर ने, चौहान सर ने काफ़ी अच्छे से गाइडेंस किया है, उनके लिए थैंक यू। नमस्कार, मैं नंदा गाड़ीवान नागपुर से नेचुरोपैथिस्ट हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं नाड़ी परीक्षण सीखूं, लेकिन किसी से भी पूछा कि नाड़ी परीक्षण कैसे सिखाओ तो कोई तैयार नहीं था कि नाड़ी इतना आसान नहीं है सिखाना। लेकिन जैसे ही मैंने चौहान सर का ये FB पे जो देखा था एडवर्टाइज और उसमें से मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने ऑनलाइन भी किया था, तब भी मुझे नाड़ी परीक्षण समझ में आई थी, ऑनलाइन कोर्स में भी। और यहाँ मैंने रेसिडेंसी कोर्स किया अभी 2 दिन का, तो पहले ही दिन नाड़ी परीक्षण का इतना अच्छा आसान शब्द में उन्होंने इतने सरल तरीके से समझा दिया कि मज़ा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपन यहाँ आने के बाद जो भी मैंने सीखा वो उसकी ज़रूरत थी, सभी को है, लेकिन पहुँच नहीं पा रही थी इतने सालों से। बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ के ये वातावरण ही बहुत अच्छा है। धन्यवाद।